Welcome back students to e-learning platform Gyan Mantra Vidyapeeth online education. Students, in today's video lecture we are going to revise the lesson from our main textbook Flamingo. The name of this lesson is the Rattrap, and today we are going to continue the discussion of this revision lecture. After the last video lecture, students, we discussed about the story of the Rattrapper, that actually the Rattrapper stole the amount of money from the old man who had actually provided him food as well as shelter. But the Rattrapper did not remember all these things, and he did not show any kind of gratitude towards this old man, and he does all these things in such kind of cunning way that actually the old man becomes very upset. The Rattrapper stole the amount of money, everything, and now he realizes that actually he should not go through the way of main road or the highway, and that's why he decided that now he should go through the way of forest, and that's why he went through the forest. And it so happens that he was lost totally inside the forest. There was no way, he couldn't find it out, and that at that time he realized that actually the world is like the Rattrapper, and he feels that actually now this forest has become the kind of rat trap for him, because he is now there inside the forest and is not able to go outside from this forest. That's why. And now there is the kind of sound, is able to listen that there is some kind of sound, and that's why he thinks that now he'll be able to go from the forest. Now he'll be able to come out from the forest, and there must be some humankind there inside and the area, and he realizes that some people can be there. So up to that point, students, we discussed in the last video lecture. Now we are going to proceed further. अभी हम आगे का पोर्शन अभी डिस्कस करने को हम करने वाले हैं. Okay, so students, you may keep your textbook with you. Yeah. All the time there were many sounds to be heard in the fall. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the fort until he stood close up to the furnace. Actually, now the Rattrapper wants to enter that portion, and now the Rattrapper wants to enter that area. It so happens that the owner of this factory is not he's not aware, rather we can say, about the arrival of this Rattrapper. Why? Because there is a lot of noise, a lot of sound because of the other tools and the working portion, and that's why there is a lot of noise also, and that's why this man, the Iron Man, could not be able to listen any kind of voice, that there is a sound that somebody is trying to enter here. So he couldn't realize any kind of things, but when he comes closer, a little bit closer, and then he realizes that okay, somebody entered here, someone has arrived here, कि कोई यहाँ पे आया है और कोई यहाँ पे आने की ट्राई कर रहा है. वो उसे अभी ऐसे रियलाइज़ हो रहा है, पर पहले उसे जब ऐसा हो रहा था तब उससे ऐसे पता नहीं चलता है, बिकॉज बहुत सारा साउंड होता है, बहुत सारा नॉइस होता है उस पर, वहाँ पे जो वर्क चल रहा है उसकी वजह से. सो ऐसे उसे पता नहीं चल पाता है, पर जब वो क्लोज आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे कोई किसी ने एंटर किया है. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the fog by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, raked, and with a bunch of red wraps dangling on the chest.
सो हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेड ट्रैपर इज ऑल्सो मेंशन कि वो कैसे लग रहा था, उसका अराइवल कैसे हुआ था, वो सभी बातें भी हमें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. एक्चुअली द पीपल लाइक द रेड ट्रैपर हु वांट एक्चुअली द शेल्टर एंड द फूड एंड लिटिल बिट वार्म लाइक फायर. ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही पुअर होते हैं, जिसके पास रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं होता है, जिसके पास खाने के लिए कोई फूड नहीं होता है, जिसके वार्म फील करने के लिए जिसके पास फायर नहीं होता है, उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत ही अलग चीज़ होती है. वो उसके लिए अभी इतनी सारी मैटर नहीं करती उनके लिए, बिकॉज दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी फुलफिल्ड. ये हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो उसे इस तरह की कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, पर उसे सोने के लिए कोई छत चाहिए और खाने के लिए कुछ फूड चाहिए, एंड सो दैट ही कैन फील वार्म, एंड दैट्स व्हाई ही रिक्वायर्स सम फायर. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. देखते हैं आगे अभी क्या होता है. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. Actually वो वहाँ पे आया था कोई भी और उसका पर्पज़ नहीं था कि वो यहाँ पे किसी के साथ रिलेशन बनाए, किसी के साथ फ्रेंडशिप करे, पर उसका सिर्फ यही एक पर्पज़ था अभी का कि दैट ही रिक्वायर्स शेल्टर टू लीव. उसे रहने के लिए कोई छत चाहिए और उसे सोने के लिए थोड़ी वार्म चाहिए, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, सो ही रिक्वायर्स वार्मनेस राइट नाउ. दैट्स वाई. नेक्स्ट पैराग्राफ. In those days, the Ramisto iron mill was owned by a very prominent iron master. अभी आयरन मास्टर की बात हो रही है, उसके जो ऑनर है उसकी बात हो रही है अभी. whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at these very moment he came into the fog on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The ironmaster didn't follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course it's you, Neil Olaf, he said. How you do look. Now it is said about the honor of दिस मील आयरन मास्टर. अभी यहाँ पे जो मील है उसके ऑनर आयरन मास्टर की यहाँ पे बात की गई हुई है, बिकॉज नाउ ही वॉज ऑन द राउंड एंड ही वॉज विजिटिंग एंड ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स, एंड दैट्स वाई ही रिच्ड एट द सेम पॉइंट. वो सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते करते वहाँ पे सेम पॉइंट पे वो आ जाते हैं और सभी चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन ही कुड ऑब्जर्व दिस पर्सन, दिस रेड ट्रैपर ऑल्सो. उससे वो इस रेड ट्रैपर को भी ऐसे फाइंड कर सके, उसे भी वो ऑब्जर्व कर रहे थे. बट हियर some strange thing happens. यहाँ पे कुछ ऐसे अजीब सा हो जाता है. What happens that actually here the iron master feels that the red trapper is his old friend. इस red trapper को ऐसे iron man को ऐसे लगता है कि ये जो red trapper है उसका कोई old friend है, उसका कोई relative है, ऐसे उसे feel होता है उसे देख के. Because according to the appearance, the look, the dressing, the red trapper has already changed. उसका जो ओरिजिनल उसका फेस है, उसका ड्रेसिंग है, वो अभी बिल्कुल भी रहा नहीं है, बिकॉज नाउ इज़ वेरी टायर्ड एंड दैट्स वाई द लॉन्ग बियर्ड एंड ऑल, उसका पूरा लुक ऐसे चेंज हो चुका है. सो कोई भी उससे अच्छे से नहीं पहचान सकता कि एक्चुअल में वो कौन है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. व्हाट हैपन्स, लेट्स सी. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramasto and didn't even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he didn't want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said.
अभी इसे रेड ट्रैपर could come to know that actually the Iron Man thinks something else. He couldn't recognize me. It means he is thinking about someone else. The Iron Master thinks actually he is someone else. The Red Trapper is someone else. So वो ऐसे सोच रहा है कि भले ही वो जो सोच रहा है हो उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसे जो भी मान रहा है उसे वो मानने दे, because right now it is not time for proper specification. The Red Trapper wants shelter to live and food to eat. उसे रहने के लिए जगह चाहिए, उसे खाना खाने के लिए उसे फूड चाहिए. So वो ऐसे जो भी बोल रहा है उसकी बातों को ऐसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है, and he confesses all the things, he accepts all the things made by the Iron Man. Okay, now let's proceed further. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you'll come home with me to go along up to the manor house and be received by the honor like an old regiment comrade. That, however, didn't please the tramp. They both these people made the kind of conversation about routine things, why did he leave and all these things, and ultimately the Iron Man offered for shelter. Means उसे अपने साथ वो अपने घर पे वो कैरी करके उसे जाता है और फिर उसे ऐसे बोलता है दैट नाउ यू शुड कम विथ मी. उसका जो ओल्ड कॉमरेड होता है इसलिए उससे वो ऐसे एक्कम्पनाई करने के लिए बोल रहा है. एक्चुअली इट वॉज द काइंड ऑफ ट्रैप. Right now Iron Master doesn't know anything about this reality, about this fact that who is this person in an actual manner. He was in the kind of misunderstanding, and even the Red Trapper also didn't know perfectly all these things, but he continued all these things. वो ऐसे सभी चीज़ों को करने को वो ऐसे कंटिन्यू करता है. Next page, students. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the fog and then sneak away as inconspicuously as possible. Actually, he had stolen the amount of money from the house of that old man. उसने वो जो old man थे उसके हाउस से उसने जो अमाउंट को उसे स्टील किया हुआ था, 30 क्रोनर्स को उसने जो स्टील किया हुआ था वो उसे ऐसे अचानक से याद आ जाता है. एंड देन ही थिंक्स दैट सपोज इज गोइंग विद दिस जेंटलमैन, शायद वो इस जेंटलमैन के साथ अगर उसके घर जाता है तो शायद उसकी पोल खुल जाएगी. एंड दैट्स व्हाई ही बिकम्स अफ्रेड. एक्चुअली ही रिक्वायर्स द शेल्टर ओनली टू स्लीप फॉर टुनाइट. उसे आज की रात को सोने के लिए सिर्फ एक शेल्टर की रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं. एंड दैट्स व्हाई ही इज थिंकिंग टू डिनाई द आयरन मैन. और इसी वजह से वो आयरन मैन को इस बात के लिए मना करने की वो सोच रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे अप टू दिस पॉइंट विल कंप्लीट. यहाँ पे आज हम कंप्लीट करते हैं. ओके, सो योर टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स, थिंक एज यू रीड फ्रॉम इनसाइड क्वेश्चन. आप में यहाँ पे जो थिंक एज यू रीड वाला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे अभी उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको राइट करने हैं, बिकॉज इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू इन योर एग्ज़ाम. वो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ही यूजफुल होंगे. सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. डोंट अवॉइड दिस थिंग्स, टेक इट सीरियसली, वर्क हार्ड and take care of your health. Okay students, so thank you, have a nice day.